All the claims about Pakistan trying to boycott the T20 World Cup honestly just sounds very bogus and weird and not very smart because they simply can't afford to do so. Yesterday, I made a video on how much BCCI had a surplus once it played Pakistan in the Asia Cup. There were a lot of issues, a lot of boycotts that was happening around Operation Sindoor. So, and all of them wanted India to boycott Pakistan. Yet India went ahead and played matches in Pakistan, multiple matches against Pakistan. The BCCI had 100 crore plus surplus just from participating in Asia Cup. It is extra additional money that BCCI has, and BCCI makes a lot of money from IPL, and any extra addition income to that is always welcome. Now, here's an interesting stat I'll share from the Pakistan perspective. Pakistan made a USD $10 billion profit, which is about 90 crores as per the current exchange rate, from the Champions Trophy that was held last year that India won. From the Champions Trophy, not also from the Asia Cup. Now imagine how much more money they have from the Asia Cup. As per estimates that I checked online, not very confirmed numbers, Pakistan has made a profit of PKR $3 billion, which is about 95 crores. So from the Champions Trophy and from the Asia Cup, Pakistan has about 200 crores they made in terms of revenue, profits, adding all of them together, not exact numbers, but clearly over 100 crores. So Pakistan cannot afford to boycott this match. Imagine they're trying to boycott only the India match. What is the hypocrisy? If you want to boycott, आप पूरा टूर्नामेंट boycott करो, एक मैच से क्या ही हो जाएगा? वो आप कर ही नहीं सकते because that is going to be the most profitable match for Pakistan Cricket Board because that is what makes you money. Cricket at the end of the day all comes down to money. बिना पैसों के ये गेम चल ही नहीं सकता, जो कि बाकी स्पोर्ट्स में काफी एविडेंट है. वेयर एज इन क्रिकेट, बिकॉज कुछ कंट्रीज में द मनी इज सो कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? आपका एक मैच भी कैंसिल हो, दैट हैज अ रिपल इफेक्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मल्टी कंट्री मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स. तो एक कंट्री का बॉयकॉट होने से या बैकआउट होने से आपका पूरा स्केड्यूल हिल जाता है, एंड दैट gets into very difficult conversations with the advertisers या फिर with the organizers or the sponsors, आपका ticketing, hotels. तो जो मेजोरिटी जो रेवेन्यू होता है, राइट, फॉर एनी क्रिकेट बोर्ड, दैट कम्स नॉट फ्रॉम टिकट बट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग राइट्स and sponsorship. That is how BCB also makes money. That's how BCI makes money. That's how Cricket Australia makes money. Because आपके जितने ज्यादा एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जितने ज्यादा होंगे, दैट मच मोर मनी विल मेक, बिकॉज टिकटिंग तो फिक्स्ड रहता है, राइट? यू कैन मेक अ वेरी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ स्टेडियम. स्टेडियम में 30,000 सीट्स है तो आप उतना ही बेच सकते हैं, यू कैंट सेल मोर. बट एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स यू कैन सेल एज मच एज यू वांट. So, for Pakistan Cricket Board to survive, they cannot afford to even boycott this match. So, most likely there's a 99% chance they will play the T20 World Cup, especially the match against India, because it makes them a lot of money. And so that the Pakistan Cricket Board is not the scapegoat, what they have done is उन्होंने ये decision दे दिया अपने Prime Minister को, ताकि Prime Minister बोलेंगे जब आप खेलो, then PCB can easily say that hey, it was not our decision, Prime Minister asked us to do so. So एक तरफ उन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया एंड एक तरफ वो डायरेक्टली बैकआउट भी नहीं कर रहे. हिपोक्रेसी तो है. देखो, पाकिस्तान इज अ वेरी हिपोक्रिटिकल टीम एंड एज अ कंट्री they have their own issues with finances and all. It's a very bad and a sad state of development. Now, they simply cannot afford to do this because not only has ICC threatened to put a sort of ban on their cricketing future, for possible bans against playing other teams, other tournaments, which means that आपके एक डिसीजन से आपका फ्यूचर का जो भी रेवेन्यू पाइपलाइन है, जो भी अर्निंग्स होने वाला है, दैट विल ऑल गो डाउन इन द ड्रेन. So, for the future of Pakistan cricket, Pakistan cannot afford to boycott. They're simply blackmailing, एक arm twisting tactic है कि जितना भी डिसीजन लेट करो ताकि हमारा कंट्री में हमको बहुत ऐसा माना जाए that okay, look, we have also have the guts to arm twist BCCI, Indian government, the ICC, which is headed by Jay Shah. So essentially they just want to look strong. उनके पास वो दम नहीं है, बिकॉज अगर वो यहाँ से बॉयकॉट करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा. Absolutely over because they have no other sources of revenue. आपका PSL ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसकी वैल्यूएशन भी बहुत कम है. IPL इज अ ग्रेट लीग, ऐसे T20 लीग है, तो क्या होगा फिर? पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स विल गो पार्टिसिपेट इन अदर लीग्स, नॉट इन IPL बट इन अदर लीग्स, जहां से वो पैसा कमा सकते हैं. बिकॉज अगर आपके पास
पीसीबी के पास पैसा ही नहीं आएगा तो प्लेयर्स को कैसे जाएगा? सो इट्स ऑल कम्स डाउन टू बेसिक सिंपल मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. आई विल लिंक these articles in the description section. So do go please check it out. I thought this is very interesting stats कि एक मैच से पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू मिलता है. अप्रोक्सीमेटली एक मैच खेलने पे पाकिस्तान गेट्स अबाउट $1 million एस्टिमेट्स होता है ये, कोई कंफर्म नहीं है. सो अबाउट 9 करोड़ का मिलता है उनको रेवेन्यू एक मैच. प्रॉफिट कितना होता है आई हैव नॉट सीन दैट, आई डोंट नो दैट. ये मुझे ऑनलाइन मिला था, फिर मैंने चैट जीपीटी को पूछा, आई लुक्ड एट सम ट्वीट्स आर्टिकल्स, तो ये सारा कंबाइन करके आई मेकिंग दिस वीडियो. सो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉफिट कमाना है दे हैव टू प्ले द मैच, एंड वहां पे तो वो पैसों के लिए ही भूखे हैं. they will have to make money for their respective board. Simple. This boycott is 99% not happening. 1% का अगर उनमें दम है, they will boycott this match and probably that will be the end of Pakistan cricket. Just like how Bangladesh has backed out from this tournament. और ये उनका भी end of the उनका जो cricketing है वो भी खत्म है अभी because who would want to play them now if they make such weird and absolutely difficult issues and demands for the other players. That's it. Thank you for watching the video. I hope you liked what I had to share. I always try to bring some numbers into the business of entertainment. And if you found it useful, think about subscribing and liking this video. Thank you so much.